वेलकम बैक टू ब्लाइंड फ्रेंड ऑफिशियल। और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि हम जीशुओ को किस तरीके से सेटअप कर सकते हैं और कैसे उस एप्लीकेशन को यूज़ करना है। वैसे तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं, लेकिन मेरी भी एक इच्छा है कि मैं जीशुओ पे वीडियो बनाऊं। तो अगर आपको मेरा ये कंटेंट पसंद आता है तो आप मेरी वीडियोस को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और पास में लगे बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट ज़रूर करना, ताकि जब भी मैं लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूं वो सीधा पहुंचे आपके पास। तो चलिए वीडियो को ना स्टार्ट करते हैं। मैं जिशुओ को ओपन कर रहा हूं। Jieshuo Plus. ओपन हो रहा है। Welcome to Jieshuo Screen Reader. Welcome to Jieshuo Screen Reader. This software aims to help blind people use their phones more efficiently. Click on the Setup wizard to set basic settings of the screen reader. Click on Permission Help to view the privacy policy or click Exit to close. हमें सेटअप विज़ार्ड पे क्लिक करना है। Setup wizard. But check permission status. Jieshuo Screen Reader needs some basic permissions to work. For instance, storage permission is used to read sound schemes, extensions or any other external data from the device. Click on Next to continue and grant all required permissions, or click Cancel to exit the software. Check permission. ओके, हमें Next button. नेक्स्ट करना है। Setup wizard. All files access. Navigate up button. तो ये पहला फाइल्स एक्सेस की परमिशन मांग रहा है, हम इसको ऑन करेंगे। Allow access to all files. On. Switch. ये ऑन है, ठीक है। Back. नेक्स्ट। Invert swiping gestures. First, let's set the basic operation mode of the screen reader. By default, Jieshuo screen reader uses the up swipe to move to the previous element, down swipe to move to the next element, and left and right swipes to execute the so-called shortcuts. If you are used to more traditional screen reader operation, please choose the invert swipe gestures option here. It should be noted that, when this change is applied, the up swipe will execute the so-called left shortcut, while the down swipe will execute the right shortcut. Now, please swipe down in order to find the option you wish to set, and double tap to activate it. ओके, तो हम क्या करेंगे, यूज डिफॉल्ट जेस्चर करेंगे। Invert swipe gestures button. Use default gestures button. ठीक है, इस पे हम क्लिक करेंगे। Read usage hints. Next, let's decide whether you wish to receive usage hints from the screen reader. Usage hints are short messages spoken on any element. These messages can help you to operate a given control, but if you are already familiar with the screen reader operation, close button. ये रीड यूसेज हिंट्स का बता रहा है, तो हम डोंट रीड करेंगे। No button. नो करेंगे। Allow reading of element indexes and display range in lists. Lists are a very important part of the Android user interface. Now, close button. No button. Yes button. यस करेंगे, है ना। Automatically read notifications from the notification bar. Please select whether you want the screen reader to read notifications. Notifications include incoming SMS messages. Read notification. Don't read notifications. Button. डोंट रीड नोटिफिकेशन बटन पे क्लिक करेंगे। Use a single TTS engine. Jieshuo screen reader can use two TTS engines at the same time. The main TTS engine will be used to read most of the information, while the secondary TTS engine will be used to read notifications and other less important content. ओके, तो यहाँ पर हम यूज टू TTS करेंगे। Use a single TTS. Use two TTS engines at the same time. Button. इस पे हम क्लिक करेंगे। The setup wizard is completed. Should you need to run the basic setup wizard again, go to General Settings, Setup Wizard. ओके, तो ये हमारा बेसिक जो है कंप्लीट हो गया है। Okay button. ओके करेंगे। Alert. Jieshuo screen reader is not enabled yet. To cancel button. अब पहले कैंसिल करेंगे इसको। Setup wizard. Setup wizard. Check permission status. Check check notification. Check file. Check alarm and check about. बैक करेंगे। Back. 20,204. और एक बार बैक करेंगे। Back. Alert. Mod by it. Join Telegram. Back. नहीं, इसको बैक Jieshuo करेंगे। Plus. 20 million to email 94604. General TTS settings. TTS सेटिंग्स में हम चलेंगे। Main TT. Secondary TT. Main TTS engine. मेन TTS इंजन हम ऑटो TTS करेंगे। Select T. Open system. Select. Select T. Ticked. System. Speak. Baidu Cloud T. iFlitUp. Samsung Text. Speech Record. Google Auto TTS Comp Speak Audits. Main TTS engine. Select TTS engine. Auto TTS Comp Speak Audits. इसको हमने करा, आगे देखते हैं। Open Auto TTS. Use a single TTS engine. Everything.
TTS rate acceleration 1. TTS rate. TTS volume. TTS pitch. Audio ducking controls whether the volume of all other sounds is lowered while Jieshuo is speaking. Not ticked. Tick box. ये ऑफ है तो हम ऑफ ही रखेंगे. बैक करेंगे. Back. TTS settings. Main TTS engine. Secondary TTS. इसको Open system TTS engine. Select TTS. Select ticked. System speak. Baidu Cloud. iFlituk. Samsung Tech. Speech. Google. Auto TT. ऑटो टीटीएस करेंगे. Secondary TTS engine. ठीक है. Back. अब क्या करना है? TTS. Scenario adaptive TTS. System TTS setting. iFlituk TTS. Speak TTS. Read custom symbol definitions. Not ticked. Tick box. इसको हम चेक करेंगे. Ticked. Custom symbol definition settings. Word exclusions and symbol handling settings. इसको हम बाद में देखेंगे. Other settings. अदर सेटिंग्स में चलते हैं. Other set. Slow down speech while in character by character browsing mode. Not ticked. Tick box. इसको चेक करेंगे. Bypass Bluetooth speaker headphones while generate. Ticked. इसको भी चेक करेंगे. Pause speech while microphone is in use. Ticked. इसको भी चेक करेंगे. Use the enhanced accessibility. इसको चेक करेंगे. Enhanced screen locking prevention mechanism. Read numbers as single digits. Not ticked. Tick box. Read punctuation. Not ticked. Read capital letters while typing. Not ticked. Read ticked. ये दोनों को हमने चेक करा. Read capital. ठीक है तो Back. TTS settings. Other settings. Navigate up button. Alert. Mod by NK official register. Back. Jieshuo Plus. 20,240,000. Email 9460492229 @qq.com button. अब हम चलेंगे ऑपरेशन सेटिंग्स में. फिर उसके बाद में हम जिशो को ऑन करेंगे. ठीक है तो हम चलते हैं ऑपरेशन सेटिंग्स में. Advanced setting. Extend. Notification. Reading settings. Operation set. Please wait. Please wait. Please wait. थोड़ा वेट कराएगा. कर लेता है कोई बात नहीं क्योंकि नए से सब कुछ सेटअप Operation करना है. settings. Navigate up button. ऑपरेशन सेटिंग्स खुल गया है और पहला वाला एक ऑप्शन है डिफ़ॉल्ट जेस्चर वाला. इस पे हम जाएंगे. Gestures default settings. Manage settings related to gesture default behaviors and options. इसमें जाएंगे. Gestures default set. Customize web page element navigation. Default navigation gesture style. Default. Swipe down up to move the focus and right left to perform shortcut gestures. इसमें चलेंगे सबसे पहले. Default navigation. Web view basic granularity navigation. Swipe right left to switch navigation type in. Web view alternative granularity navigation. Web view ticked. Default. Swipe down up to move the focus and right left to perform shortcut gestures. हमें 9वें नंबर पे जो ऑप्शन आता है उस पे क्लिक करना है. Web 2 3 global 4 5 default. Web view basic granular. Web view global basic global cancel. Global basic granularity navigation 2. Swipe down up to switch between navigation types in all views and swipe right left to move within the selected type. इस पे हम चेक करेंगे. 9वें नंबर पे जो ऑप्शन आता है उस पे हम चेक करेंगे. अगर हम 10वें नंबर पे क्लिक कर देते हैं तो हमारा जो टॉकबैक है वो जैसे टॉकबैक में अप डाउन से कैरेक्टर वर्ड करते हैं ना एक उंगली से वैसे हो जाएगा. बट मैं पुराने टॉकबैक की तरह करना चाहूँगा. Web view global alt cancel global इसको gestures default settings default चेक remember किया. और अब क्या करेंगे. back button ऑन करेंगे operation settings स्क्रीन back Jieshuo advanced extension tool download more accessibility ओके. more options search accessibility about access installed installed service installed Jieshuo Plus off Jieshuo Plus shortcut press power and volume up keys Jieshuo Plus off Jieshuo Plus Jieshuo Plus off switch allow Jieshuo allow Jieshuo Plus on switch showing navigate Jieshuo Plus. ठीक है ये ऑन हो गया. मैं टॉकबैक को बंद करता हूँ. Talkback off. New notification from Android system held volume keys. Talkback turned off. अब मैं यहाँ पर कैरेक्टर वर्ड करता हूँ. देखो Labels. Default.
Screen areas. OCR and trans TTS rate. Media volume. Copying mode. Pages. Paragraph. Sentence. Words. Caret. Vertical navigate. Scrolling mode. Nodes. Clickable. Focus. List. Type list. Progress. Checkbox. Images. Text button. Label. Default. Screen areas. Default. देखा, तो ये हमारा इतने तक का ट्यूटोरियल है। आई होप कि आपको पसंद आएगा। मैं एक ही उंगली से सब कुछ कर रहा हूँ। Labels. Default. Screen areas. Default. देखो, तो आई होप कि आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को करिए सब्सक्राइब। Accessibility list. Accessibility. Enter keyword text box. Accessibility list browsing.